Hello friends, today we'll start the new concept, the concept of interface. Now what do you mean by interface? Why interface is required? What is the basic purpose of interface in Java? So to explain this thing, first we'll revise our previous lectures of inheritance. We already learned this topic, that is a type of inheritance, but in that session I have kept all this figure together: single, multi-level, hierarchical, multiple and hybrid. But in this session I have separate out this whole figure. एक साइड पे मैंने 3 फिगर रखा हुआ है और दूसरे साइड पे मैंने अलग से 2 फिगर रखी हुई है. So these 3, that is single, multi-level and hierarchical, these 3 types of inheritance are supported by the Java. But Java does not support the multiple inheritance as well as hybrid inheritance. So it's a problem. क्यों मैं उसको प्रॉब्लम बोल रहा हूँ? बिकॉज मान लो कि अगर आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आ गई जिसके अंदर यू हैविंग ओनली वन डिराइव्ड क्लास एंड यू नीड द प्रॉपर्टीज फ्रॉम द 2 बेस क्लास, एट दैट टाइम व्हाट यू विल डू? सो एज अ सॉल्यूशन Java provides the concept of interface. So अभी के लिए आप इतना याद रखो कि interface is used to provide the facility of multiple inheritance in Java, because Java does not support the multiple inheritance. So as a solution, Java provides the facility of interface. Okay, अभी के लिए आप इतना याद रखो. So this is the basic purpose of using interface in Java. Now how to define interface, how to use the concept of interface in our program. So let's check the example in NetBeans and we'll study the concept of interface in detail. Okay, so open the NetBeans and I will create the new project, Java application, and I will keep the name for this project is lecture 9, as we are in lecture 9. And after creating the project, the next step is create the class, right click, new, Java class, interface demo, finish. Chalo, how to make interface? To make the interface, Java provides the keyword and that keyword name is interface. तो चलो एक इंटरफेस बनाते हैं. इस इंटरफेस का नाम रखता हूं मैं A. अब टिल नाउ वी हैव मेड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस. तो जैसे हम क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही टू मेक द इंटरफेस हियर वी आर गोइंग टू यूज द कीवर्ड इंटरफेस एंड A. नाउ इन दिस इंटरफेस आई एम गोइंग टू डिफाइन सम मेथड public void test semicolon. Clear? Now one thing that you have to remember for the interface is, inside the interface you cannot write the logic of any method. That means you just need to specify the signature type of method, put the semicolon and leave it. If you try to define the logic of that method inside the interface, then it will display an error like this. So interface will contain only the method signature type. It is not possible for you to define the logic of any method inside the interface. So उसका logic कहाँ पे लिखना है? Where we are going to write the logic for this test method, for this interface test method. That is the beauty of interface. चलो इसी interface को मुझे class के अंदर use करना है. चलो now I'll make one class demo. Now in the case of inheritance we have learned this keyword. Which keyword? Extends keyword. So whenever you are going to use extends keyword, that means you are talking about the base class and derived class hierarchy. But in the case of interface, Java introduced one new keyword and that keyword name is implements. So class demo implements
or interface. Clear? Okay, so class demo implements A. Now यहाँ पे मुझे एरर क्यों दिखा रहा है ये लोग? चलो देखो तो क्या पढ़ो तो, डेमो इज नॉट द एब्स्ट्रैक्ट एंड इट डज नॉट ओवरराइड द एब्स्ट्रैक्ट मेथड टेस्ट इन ए. दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या है, अगर आप किसी भी क्लास के अंदर कोई भी इंटरफेस को आप इंप्लीमेंट करते हो, देन इट इज कंपल्सरी फॉर यू टू डिफाइन द लॉजिक फॉर दैट मेथड इनसाइड द क्लास. If I forgot to write the logic of test method into this class, then my program will not execute. So that is the characteristic of interface. If you implement any interface, so उस interface के अंदर जितनी भी methods हो, यहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ एक ही है, so जितनी भी methods हो वो सारे methods के logic you have to write down inside the class. So ये error कब जाएगी? Whenever I am going to write the logic for this test method, because here I have implement the interface A. So to solve this error, चलो इस मेथड को ओवरराइड करते हैं, public void test, error गायब. So this is the rule. If you implement any interface, then you have to write down the logic for the interface method inside the class. Clear? So यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं, system.out.println interface method. Clear? Okay. So this is the interface A. This is the class which implements this interface A. And क्या मैं इसके अंदर कोई अपनी नॉर्मल मेथड डिफाइन कर सकता हूँ? नॉर्मल मीन्स व्हाट? क्लास की अपनी खुद की. यस, यू कैन डिफाइन any number of methods inside the class, like public void display and system.out.println class method. So in this class we have defined total two methods, the one specific for this class and the one method from the interface. आप कितनी भी मेथड इस क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हो, बट रिमेंबर वन थिंग, इस मेथड को भूलना मत, अदरवाइज योर प्रोग्राम विल नॉट एग्जीक्यूट. क्लियर? ओके, चलो. इनसाइड दिस क्लास विल क्रिएट द मेन मेथड एंड इन मेन हियर आई एम ट्राइंग टू मेक द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस. नाउ कंसीडर ओवर हियर न्यू A. It's not possible. I cannot create the object of interface, but I can create the reference of interface. Yes, look at. Now can you relate this concept with some another concept that we have already learned into the previous session? Yes, good. Abstract class. एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर भी अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, देन उसके भी कोई मैजिक, उसका भी कोई बॉडी नहीं होता, उसका भी कोई लॉजिक नहीं होता. सेम एज इंटरफेस लाइक दिस, यू कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास. अगेन सेम एज इंटरफेस लाइक दिस, आई कैन क्रिएट ओनली द रेफरेंस. कैन यू रिलेट दिस कंसेप्ट ऑफ इंटरफेस विद एब्स्ट्रैक्ट क्लास? यस और नो? यस, गुड. इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ये प्रोग्राम खत्म कर लेते हैं. सो A1 इक्वल टू न्यू डेमो. क्या ये कर सकता हूँ? यस, बिकॉज मैंने इंटरफेस का सिर्फ रेफरेंस क्रिएट किया हुआ है और वो रेफरेंस इंटरफेस को देने की वजह मैंने किसको दे दिया है? क्लास को. सो दिस इज ओके. क्लियर? एंड आफ्टर राइटिंग दिस स्टेटमेंट हियर आई एम ट्राइंग टू कॉल A1 डॉट test method. Clear? But if I am going to write A1 dot display, is it possible? Can I write or can I call the display method with the use of interface reference? No. क्यों? Because display method is from the class only, while the test method is for the interface. So अगर आप interface का reference create करते हो, then with the help of interface you can call only interface method.
You cannot call any class method with the help of interface reference. If you want to call this display method, then first you have to create the object of demo class, and with the help of that object you can call the display method. Clear? So with the help of interface reference you can call only interface method. Is it clear? Okay, right click, run, and I'll get the output like interface method. So this is how you can use interface in your program. Now यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा? Types of inheritance, and interface is generally used to provide the facility of multiple inheritance. That means if I am having more than one base class, then also I can inherit that two class into the derived class. So directly Java does not provide this type of facility, but with the help of interface we can implement this type of facility. How? चलो देखते हैं. एक इंटरफेस ऑलरेडी हमारे पास है. चलो we'll take one more interface B, और उसकी कोई एक मेथड ले लेते हैं, public void test B, सेमीकोलन करके उसको छोड़ देना है, because we cannot write the logic inside the interface method. So now I am having two interface, one is A and one is B. Assume these two are class. Assume these two are class A and B. Now I need to make one derived class which use the properties of these two class. So how to achieve this thing? It means then class demo implements A comma B. Yes. So this is the way to achieve the facility of multiple inheritance in Java. So I can implement more than one interface like this with the help of comma separated operator. But if I want to write like this, class demo extends A comma B, is it possible? No. You cannot extend more than one base class, but you can implement more than one interface. Clear? So this is how you can achieve the functionality of multiple inheritance in Java. Like this, class A, class B, interface B, और दोनों को एक साथ डिराइव क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट कर दो. यहाँ पे मुझे क्यों एरर दिख रहा है? बिकॉज आई हैव नॉट इम्प्लीमेंटेड द मेथड ऑफ इंटरफेस बी. उसको जैसे ही इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ वैसे वो एरर गायब हो जाएगी. लाइक दिस, पब्लिक वॉइड टेस्ट बी. देखो एरर सॉल्व. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन interface B method. Clear? So this is how you can achieve the functionality of multiple inheritance in Java. So you cannot extend two base class, but you can implement more than one interface. So that is the difference between normal class and normal interface. Clear? Okay. Now अभी मैंने आप लोगों को बताया कि there are so much similarities between interface and abstract class. आपको प्रोग्राम है याद है abstract class का? चलो एक बार यहाँ पे हम लोग ढूंढते हैं. यहाँ पे हमने ऑलरेडी किया था abstract class का प्रोग्राम. कौन से लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एब्स्ट्रैक्ट क्लास? आई थिंक इसके अंदर ही पढ़ा था, लेकिन अभी मुझे मिल नहीं रहा. सो फॉरगेट इट. नाउ
चलो, इंटरफेस वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट, मैंने दोनों की आपको सिमिलरिटीज बताई. क्या थी सिमिलरिटीज? द फर्स्ट सिमिलरिटी इज you cannot create the object of interface, same way you cannot create the object of abstract class. Second similarity, in the case of interface I cannot define the body part of any method. Same thing is applicable for the abstract class. अगर आप किसी मेथड को एज एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करते हो then you cannot define the body part. Clear? So what is the basic difference between interface and abstract? And this is the most common and most important question for any examination as well as for any interviewer. So here I am trying to show the difference between interface and abstract with the help of figure. Now in this figure there is one interface vehicle and there is one abstract class dog. Between abstract class, if you want to use the concept of abstract class, then which keyword is useful? Extends. And if you want to use the concept of interface, then which keyword is used? Implement. So this is the first and simple difference. Between class you can use extend, but between interface and class you can use implements keyword. Now the detailed difference between interface and abstract is, whatever variables that you are going to declare into the interface, all that variables are by default final. Final means what? By default constant. I cannot change the value of that variable throughout my program. While in the case of abstract, this thing is not possible. You can declare public, private, protected, any types of variable inside the abstract class. चलो एक बार देखते हैं इसका मीनिंग क्या है. इफ आई एम गोइंग टू डिफाइन एनी वेरिएबल लाइक दिस, इंटीजर p equal to 20, that means this variable becomes the final variable by default. So I cannot change the value of p variable in any class. So just remember this thing, whatever variables that you are going to declare inside the interface, all that variables become the final and constant in Java. While in the case of abstract class, you can declare any types of variable. You can declare public, private or protected. So this is the most important difference between interface and abstract class. Now the second difference is, उसका second difference क्या है? The second difference is, in the whatever members in Java interface, all that members are by default public. और ये ज़रूरी नहीं है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर पब्लिक भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं और प्रोटेक्टेड भी हो सकते हैं. क्लियर? ओके. नाउ द थर्ड डिफरेंस, in the interface we use implements keyword, while in the case of abstract class we'll use extend keyword. Okay. Now the next difference, an interface can extend another Java interface. Again I am reading this sentence, interface can extend another Java interface. इसका मीनिंग आपको पता है क्या हो सकता है? आपके पास दो इंटरफेस है और वो दो इंटरफेस के बीच आप इनहेरिटेंस का कंसेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हो. कैसे? चलो देखते हैं एक बार. नाउ विल ट्राई टू मेक वन न्यू प्रोग्राम. इस प्रोजेक्ट को बंद कर देते हैं. राइट नाउ वी आर इन 9th लेक्चर. न्यू जावा क्लास इंटर डेमो. आपने लाइन पढ़ी ना, मैंने क्या पढ़ा था? बिटवीन टू इंटरफेस आई कैन यूज एक्सटेंड कीवर्ड. चलो देखते एक बार होता है कि नहीं. इंटरफेस ए एंड इसके अंदर कोई लिख देता हूँ मेथड पब्लिक वॉइड a1. ओके. देन एक और इंटरफेस बनाता हूँ, इंटरफेस b1 और इसके अंदर कोई एक मेथड लिखता हूँ पब्लिक वॉइड b1. ओके. नाउ हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी? एन इंटरफेस कैन एक्सटेंड द अनदर जावा इंटरफेस ओनली. दैट मीन्स
I can write extends keyword with interface of, yes it's right, because यहाँ पे कोई भी एरर नहीं दिखा रहा. मेरे पास एक इंटरफेस है A1, दूसरा इंटरफेस है B1, और वो कोई एक इंटरफेस में से प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहा है, बिकॉज हियर आई हैव यूज एक्सटेंड्स कीवर्ड. सो यू कैन यूज एक्सटेंड्स कीवर्ड बिटवीन टू इंटरफेस जस्ट लाइक बिटवीन टू क्लास. सो इसका मीनिंग क्या हुआ? इंटरफेस B1 is the derived interface which inherit the properties from its based interface A1. So इसका मीनिंग क्या हुआ? If I am going to write class test implements B1, then I need to define the logic of B1 method as well as A1 method. Why? Because B1 interface is already extended the properties from the A1 interface. अगर आप लोगों को ये मेथड खुद नहीं लिखनी है, so you can allow NetBeans to write this or to override this method like this by clicking on this sign, implement all abstract method. When you click on this message, it will implement both B1 as well as A1. इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दो. सेम वे इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दो. सो दिस इज हाउ NetBeans सॉल्व योर एरर. क्लियर? और यहाँ पे ऊपर क्या लिख के आता है? ओवरराइड. दैट मीन्स वी आर ओवरराइडिंग द मेथड ऑफ इंटरफेस. Clear? So this is how you can use the extends keyword between two interface. और इसका मेन एडवांटेज क्या है? यहाँ पे मुझे A1, B1 ऐसे दो इंटरफेस नहीं लिखने पड़ते. अगर मैंने यहाँ पे extends नहीं लिखा, so in that case separately I have to write A1, B1. Is it clear? So this is how you can also achieve the extension version of interface. So you can write extend keyword between two interface. चलो यहाँ पे हम लोग डिफरेंस देखते हैं कि डिफरेंस क्या दिया हुआ है. An interface can extend the another Java interface only, but in the case of abstract class, it can extend the another Java class as well as it can also implement the Java interface. I think this point must be clear now. Yes or no? Good. And the last difference, the Java interfaces are slightly slow because it requires the extra direction कि आपको कहाँ पे जाके implement करना है, while the abstract class is comparatively fast. So these are the various difference between interface and abstract that you have to remember. But the basic and most common difference is what? All the members of interface are by default public, but in the case of abstract class it is not necessary. It may be public, it may be private or protected. Clear? Okay, now the next slide, extension with two interface, that we already seen this demonstration. Okay, so finally if I want to conclude this lecture, then between two class, अगर मेरे पास दो class है, then between two class I can use which keyword? Extends. Okay, अगर मान लो मेरे पास एक क्लास है और एक इंटरफेस है, then which keyword is useful? Implements. और दो इंटरफेस के बीच कौन सा कीवर्ड आएगा? Extends. So this is the summary of this lecture. This is the conclusion of this lecture. Between two class, extends keyword, class and interface implements, and between two interface again the extends keyword. So this is how the interface is more useful, and this is how the interface is how solve the problems of multiple inheritance in Java for the developers. So that's it from this session. We'll meet into the next session with some more interesting concept like package and exception handling. So तब तक के लिए टाटा, goodbye, good night. Thank you for listening. Goodbye.